alaikum Credit. How are you? I hope all of you are fine. I hope all of you are happy, safe, healthy, studying at home and going to school as well. Be happy, be safe and keep on studying. Studying is very important. So what we are going to do today, I'm going to tell you within a minute. But before that, I just want to give you a piece of advice. पढ़ना बहुत ज़रूरी है बच्चे, पढ़ना बहुत ज़रूरी है. इसलिए पढ़ाई करो, एक नंबर ऑफ आवर्स, 3, 4, 2, whatever that suits you, अपनी पढ़ाई के लिए फिक्स करो. ठीक है, चलो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं. जी, what is today's lesson all about? Today's lesson is Unit 24 of the Grammar-3, which speaks about the vocabulary. ये लेसन आपका vocabulary building का है. ये लेसन 2 different parts of speech में divided है. एक तो adjective और एक adverb. इस लेक्चर में मैं आपके साथ adjectives करूंगी. ठीक है? I hope that by this time you have taken 148 and 150 page number out of the Grammar-3. ठीक है, आई होप दैट यू हैव टेकन देम आउट. इसीलिए मैंने शुरू में थोड़ा सा टाइम लिया था एडजेक्टिव और एडवर्ब को डिस्क्राइब करने का. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. वोकैबुलरी का लेसन है ये, एडजेक्टिव्स हैं. सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. ठीक है, करेक्ट. एडजेक्टिव्स आर एक्चुअली डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. यू आर एब्सोल्युटली राइट. Adjectives noun को explain करते हैं. You are right. Adjectives make a text become alive. This is correct as well. बेटा adjectives वो होते हैं जो किसी भी writing को उसका true essence देते हैं. ठीक है, आपके अल्फाज जितने खूबसूरत होंगे अगला उतना ही मुतासिर होगा. हमारी एक लिमिटेड सी वोकैबुलरी है. हम लिमिटेड सी वोकैबुलरी लेके ये समझते हैं कि हम दुनिया फतह कर लेंगे, तो बेटा ऐसा नहीं होता. वी नीड टू इंक्रीज आवर वोकैबुलरी. वी नीड टू यूज बेटर वर्ड्स. ठीक है, तो कौन से वो बेटर वर्ड्स होते हैं जिनको हम उन ऑर्डिनरी वर्ड्स के साथ रिप्लेस करके अपनी स्पीच को, अपनी वोकैबुलरी को, अपनी प्रेजेंटेशन को इम्प्रेसिव बना सकते हैं फर्दर, वो आज हम करने वाले हैं. ठीक है, तो एडजेक्टिव हमारा हो गया. अब आप ये देखें कि उन्होंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं. एग्जाम्पल्स मैंने एज इट इज बोर्ड पे लिखी हुई हैं. उन एग्जाम्पल्स के साथ उनकी मीनिंग्स भी लिखी हुई हैं और उनसे बेहतर वर्ड्स भी लिखे हुए हैं, ताकि आपको एक क्लैरिफाई हो कि एक वर्ड जिसका इम्पैक्ट बिल्कुल नॉर्मल और एवरेज आता है और एक वर्ड जिसका इम्पैक्ट बहुत खूबसूरत आता है, दोनों में क्या फ़र्क है. अगेन एंड अगेन I speak the same word. The entire world is scripted. पूरी दुनिया स्क्रिप्टेड है. ठीक है, इवन रब्बुल आलमीन ने स्क्रिप्ट भेजा है हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए. ठीक है, कुरान मजीद जो रब्बुल आलमीन का कलाम है वो भी स्क्रिप्ट है, और वो ऐसा स्क्रिप्ट है जिसको कि रब ने कहा था कि हमेशा महफूज रहेगा, मैं इसको महफूज रखूंगा. ठीक है, तो हम अपनी वोकैबुलरी को कैसे इम्प्रेसिव बना सकते हैं ताकि हमारी क्रिएटिव राइटिंग हमको बेटर मार्क्स दे जो अब हम ले रहे हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल आपका था द मार्केट वॉज फुल ऑफ लवली फ्रूट्स. ठीक है, इसमें फ्रूट्स को लवली से उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, कैरेक्टराइज किया था. ठीक है, डिस्क्राइब किया था एडजेक्टिव लवली से. अगर हम इसकी जगह ये लिखें दैट द फ्रूट वॉज राइप और लशियस. देखो, राइप और लशियस का जो इफेक्ट है, आपके मुंह में पानी आ गया राइप सुन के. एक राइप मैंगो अगर है आपके पास, एक लशियस जूसी राइप मैंगो है, तो उससे बेहतर मेरा ख्याल है दुनिया में कोई चीज नहीं है. ठीक है, तो वो कहते हैं दिस मार्केट वाज फुल ऑफ राइप एंड लशियस फ्रूट्स. इम्पैक्ट डिफरेंट हो गया. यू कैन एक्चुअली कैरेक्टराइज, यू कैन एक्चुअली पिक्चराइज, you can actually make an image of something that is being presented in the market. ठीक है, आप अपने दिमाग में जो चीज मार्केट में प्रेजेंट हो रही है उसका इमेज बना सकते हैं. ठीक है, सो these words are used.
Second example, I was fascinated by the nice plumage of the birds. Plumage क्या होती है? वो जो उनकी feather का color होता है, ठीक है, nice plumage, ठीक है, fine, good, okay. लेकिन अगर हम nice की जगह brilliant करें तो हमारे दिमाग में African parrots आते हैं. अगर हम उनको करें multi-hued तो can you imagine the Brazilian parrots? कितनी खूबसूरत प्लूमेज होती है उनकी. कैन यू थिंक अबाउट द पीकॉक्स, है ना? तो अगर हम नाइस की जगह ये वर्ड्स यूज करते हैं तो हमारी इमेजरी, हमारी इमेजिनेशन ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है और वो ज़्यादा उस चीज़ को रिलेट कर सकती है, वो ज़्यादा उस चीज़ के साथ इफेक्टिव होती है कि जो आप बताना चाह रहे हो. ठीक है, ये थी आपकी एग्जाम्पल्स के बाद आपकी एक्सरसाइज ए थी. एक्सरसाइज ए में उन्होंने आपको वर्ड्स दिए हुए थे एडजेक्टिव्स, ठीक है, और आपसे कहा था कि उन एडजेक्टिव्स के साथ बेटर वर्ड्स फाइंड आउट करें. ठीक है, जैसे फर्स्ट एडजेक्टिव था अ ग्रेट मूवी. ठीक है, I went to the cinema, I watched a movie and I came back and I said it was a great movie. Instead of the great, if I had said that it was a prolific movie, it was an exceptional movie. The direction was exceptional. The stunts were exceptional, out of the world. तो वो ज़्यादा impressive नहीं होता है ना? तो हमने great की जगह आज दो नए vocabulary words सीखे हैं, prolific और exceptional. इसी तरह आपका second example और second phrase है a fantastic book. I want you to read The Kite Runner. It's a fantastic book. Instead of fantastic, you can say remarkable, extraordinary, interesting, engrossing. See, it gives a better effect. It is better to hear it. ठीक है, you are compelled to go and read the book after hearing the review from your best friend regarding that book. हम कहते हैं ना, यार क्या जबरदस्त किताब है ना? तो इसी तरह इंग्लिश में अगर हम बेटर वर्ड यूज करेंगे तो उसका इफेक्ट भी बहुत बेहतर हो जाएगा. A good meal, a filling meal, a yummylicious meal, a delicious meal. डिफरेंस देखा है? हम क्या करें, हम साथ साथ अपनी वोकैबुलरी बिल्डअप कर रहे हैं. अ बैड मैन, एन इमोरल मैन, एन अनएथिकल मैन, अ मिस्चीवियस मैन, अ इम्पिश मैन, अ स्लगिश मैन. कितने डिफरेंट एडजेक्टिव्स हम यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ द सिंपल प्लेन बैड. ठीक है, अ क्रिमिनल, कितना कुछ हम यूज कर सकते हैं just to replace this bad. A cool celebrity. OMG, I went out and saw Shahid Afridi. He is a cool celebrity, a dashing celebrity, a sensational celebrity, a charming celebrity. Charming we can use for Myra Khan for girls but not for Shahid Afridi. But then dashing can be used for Shahid Afridi, can't it? है ना? तो हमने क्या किया, हमने एक्सरसाइज ए सॉल्व की, तमाम जो अंडरलाइन एडजेक्टिव्स थे उनके लिए बेटर वर्ड्स ढूंढे. लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज बी. ठीक है, एक्सरसाइज बी क्या लेके आ रही है? एक्सरसाइज बी के ऊपर एक आपके पास टेबल ऑफ गिवन वर्ड्स है. वो टेबल मैंने कॉपी नहीं किया है लेकिन मैंने आपको एक्सरसाइज पूरी दे दी है. लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज बी एंड आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर. जी, तो इस एक्सरसाइज के साथ बुक में आपके पास कंप्लीट टेबल है, पर मैंने कंप्लीट टेबल नहीं दिया आपको. मैंने आपके साथ हेल्पिंग वर्ड्स लिख के, उसका आंसर्स लिख के पूरे फिल इन द ब्लैंक्स कॉपी कर दिए हैं. ठीक है, आपका काम ये है कि आप मेरे साथ साथ इनको समझें, ब्लैंक्स को फिल करें, so that we know what the answer is and so that we can build up our vocabulary with the example sentences. ठीक है, vocabulary build up तभी होती है बेटा जब हमारे पास example sentences हों,
और जब हमारे पास एग्जाम्पल सेंटेंसेस होते हैं तो हम उन सेंटेंसेस को अपनी क्रिएटिव राइटिंग में यूज़ करके फर्दर यूज़ करके पक्का याद कर लेते हैं। अगर आपने वोकैबुलरी बेहतर करनी है तो रोज़ के 2 वर्ड याद करें और उनको अपनी क्रिएटिव राइटिंग में यूज़ करें, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट was you will get sick if you will eat this food, it is completely cannot be eaten। ठीक है, ये क्या है? ये है inedible। edible का मतलब होता है something that can be eaten और inedible का मतलब होता है something that cannot be eaten। edible होता है this is edible, you can eat it। ठीक है, sometimes there has been a revolutionary progress in the field of baking। क्या क्या कमाल केक नहीं आते, ठीक है, और आपके सामने पड़े होते हैं और आपको लगता है कि this is something else, it's not a cake, or and somebody tells you that it's edible, you can eat it, it's a cake, right? So if something is unfit to be eaten, it's called as inedible। क्लियर हो गया? inedible। edible के साथ हम prefix लगा देते हैं in ताकि वो उसके एंटोनिम में चेंज हो जाए। एंटोनिम क्या होता है? ऑपोजिट। किसी भी वर्ड को उसके ऑपोजिट में अगर आपने चेंज करना होता है तो उसके आगे प्रीफिक्स लगा सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट इज अ ब्लाइंड मैन क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट, दैट इज इनक्रेडिबल। इफ अ ब्लाइंड मैन climbs Mount Everest, which is the highest mountain peak, then it is definitely hard to believe, which is incredible। ठीक है, hard to believe, incredible। A heat wave in December, inexplicable। Something that can be explained is explicable and something that cannot be explained is inexplicable। ठीक है, explicable something that can be explained, inexplicable something that cannot be explained। ठीक है, in our boarding school our names are written with indelible। ठीक है, indelible ink। Something that cannot be erased। Delible is something that can be erased and indelible is something that cannot be erased। It was difficult to rescue people in flood because many houses were inaccessible। Accessible, something that can be reached, inaccessible, something that cannot be reached। ठीक है, if you won't follow the traffic rules, the traffic accident is inevitable। Inevitable, unavoidable, is going to happen definitely। ठीक है, inevitable is unavoidable, something that is going to happen definitely। ठीक है, she has been my best friend since our school days, we are practically inseparable। ठीक है, separable, that is something that can be separated, and inseparable, something that cannot be separated। So she and her best friends are inseparable। It was dash of you to make fun of his complexion, he is very self-conscious। I think my dupatta erased it about it। ठीक है, it was insensitive। ठीक है, not concerned about others' feeling, insensitive। When you are not concerned about others' feeling, you are insensitive। Alright, you have learned 8 vocabulary words along with their meanings
and their sentences as examples, and we have put in the vocabulary words together. ठीक है, with your input, alhamdulillah, I have put it in the blanks. Let's move on to the 9th vocabulary word. Let's see what the 9th vocabulary word has brought for us. Alright, 9th sentence says, I am surprised that he was terminated from his job. He was an honest and industrious. ठीक है, industrious कौन सा होता है? Industrious होता है वो शख्स जो हार्ड वर्किंग हो और sincere हो. The speaker needs a microphone. He is almost inaudible. Audible, something that can be heard. Inaudible, something that cannot be heard. ठीक है, audible, something that can be heard. Inaudible, too soft to be heard, or something that you are unable to hear. Many of the problems in the society because people are intolerant. Tolerant का मतलब होता है बर्दाश्त करना. Intolerant का मतलब होता है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना. ठीक है, intolerant of others' beliefs. ठीक है, impatient with views and behaviors that unmatch one's own. ठीक है, आपके व्यूज और बिलीफ से अगर कोई चीज मैच नहीं करती और आप उसकी वजह से impatient हो जाते हैं तो उसको कहते हैं intolerable. He is not a citizen of Pakistan, so he is ineligible. Eligible when you are good for something and ineligible when you are not good to apply somewhere. Not having the required qualification for participation, you are ineligible. An effective leader must be sure of himself. He cannot afford to be indecisive. ठीक है, अगर आप किसी के लीडर हैं तो आपने डिसीजन ले लेना है and you have to stick to your decision. आप indecisive नहीं हो सकते. You have to take one decision and you have to be firm about it. ठीक है, he was awarded a bravery medal for his intrepid rescue. Intrepid का मतलब होता है brave, courageous, bold. ठीक है, इसका ये मतलब होता है rescue of a drowning man. He lost his job as he is utterly lacking the ability and skills to get the job done. Incompetent. He lost his job because he was incompetent. He was not good enough to work there. He was not good enough to fight in the competence, okay, to fight his competitor. ठीक है, to be competent, to show others that he is good in the said field. So that is why he was fired. हमने कर लिए पूरे के पूरे 15 words, पूरे के पूरे 15 sentences, पूरे के पूरे 15 adjectives, और हमने अपनी vocabulary को further enhance कर दिया. अब we will move on to the next board where I have written exercise C for you. Let's see what exercise C has brought for you. What further vocabulary exercise C has, right? Let's move on. Alright, this board speaks about the matching. Over here are a few adjectives and their explanation. Okay, a person who is, all these adjectives are applicable to the specific human being, alright, and the meanings these adjectives carry. It's a column in your book which has matching. You have to match the correct adjective to its meaning, which I had done for you on the board. ठीक है, आपको साथ adjective पढ़ के सुनाऊंगी, उसकी meaning पढ़ के सुनाऊंगी और आपको उसका सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करके दूंगी. ठीक है, आपने मेरे साथ साथ सुनना है, मेरे साथ साथ मैच करना है
और साथ साथ सेंटेंस लिखना है. I know that I go very slow. My speed is slow, not the volume, just because it is easier for you to note down in your notebooks. Right? अब आपका पहला adjective है aggressive. Who's aggressive? Somebody who is pushy, always seems to be ready to fight. काफी कॉमन वर्ड है, काफी जगह आप यूज करते हो, आपको इसकी मीनिंग्स पता है. His aggressive attitude has brought him defame or a lot of scolding from the elders. ठीक है, in the school and out of the school. Or his aggressive attitude has brought him hatred everywhere he goes. Right? Next word आपका है arrogant. Arrogant is a quality that is being displayed by somebody who has excessive pride. His arrogant attitude has left him penniless. His arrogant attitude has left him friendless. ठीक है? Compassionate. Compassionate is somebody who displays understanding and sympathy. My teacher is very compassionate and she understands each and every problem that I face. Conscientious. Conscientious is somebody who takes time to do the right things. बड़ी जगह आपके रिपोर्ट कार्ड रिमार्क्स में लिखा हुआ होता है कि he or she is a very conscientious student. ठीक है, who works hard to achieve higher targets. Right? So his conscientious behavior in his academics has always brought him higher grades. Conservative. Conservative means traditional or considered to be old-fashioned. His conservative ways had let him be alone in the society. Because of his conservative ways, people have stopped talking to him or stopped meeting him. Cynical. Distrustful of human goodness and integrity. The problems he had faced in his childhood has left him cynical. ठीक है, बचपन में कोई उसको problems हुए थे and now he is distrustful of the human goodness. Devious. Devious means sly or untrustworthy. His devious plans has left him with no one at his side. Devout. Practice his religious faith. The Maulvi Saab at the mosque is a devout and an honest person. Right? Domineering. Constantly trying to control others. Because of her domineering behavior, I have broken up my friendship. ठीक है? Eloquent. Speaks persuasively, fluently. A Muslim is supposed to be an eloquent person in order to impress others to come and accept Islam. Ethical. Acts as per strict moral code, law-abiding. A good citizen is an ethical citizen. We must all become ethical citizens in order to help Pakistan progress. Impulsive. Acts spontaneously, often without thinking. Running away from the crime scene, running away from the accident was an impulsive act of mine. Right? Naive. Innocent, trustworthy, lacking experience. Alright? Somebody who is very innocent is naive. The small child, naive and innocent, was tricked by the trickster. Self-controlled. Asks in a shy, awkward manner. Somebody who is self-controlled acts in a shy, awkward manner. The new student is self-controlled and introvert. She has never spoken to anybody yet. Submissive. Giving in easily, not ready to conflict. My best friend is a submissive person. He agrees to everything that I say. क्विक रिकैप करें आज के लेक्चर का. आज हमने किया यूनिट 25 ग्रामर 3 का और उसके साथ हमने की उसकी वोकैबुलरी और
ढेर सारे एडजेक्टिव्स, उनकी मीनिंग्स हमने लर्न किए आज, ढेर सारे एडजेक्टिव्स दैट कैन बी यूज्ड विद द ह्यूमन पर्सनालिटीज और विदाउट द ह्यूमन पर्सनालिटीज. आई होप आपने मेरे साथ सेंटेंसेस किए होंगे, एग्जाम्पल्स किए होंगे और अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज किया होगा. Next time, inshallah, we'll meet together with another lecture. By that time, Faiza Nadeem is signing off. Allah Hafiz.